Today we are going to discuss about a new topic that is called as spinal nerves. Typical spinal nerve. What does it mean, typical spinal nerve and atypical spinal nerves? See, when we talk about the nervous system, we have a central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, which includes the CNS, that includes the brain and the spinal cord, and peripheral nervous system, the system which is carrying the signal from the central nervous system to the periphery, and those are the nerves. We call them cranial nerves and spinal nerves. We have a 12 pair of the cranial nerves which are coming out from the brain, and we have a 31 pair of the spinal nerves which are coming out from the spinal cord. So these nerves are connecting our periphery system to the central system. That's what it has been called as peripheral nervous system. Among these peripheral nervous system, जो spinal nerve, today is the topic which I have taken, that is typical spinal nerve, which is very important for the UG. Because I have seen number of times the students, they do not get idea about the spinal nerve, how to draw the diagram in the exam and what are the things which we have to write in the typical spinal nerve. This is very important question which generally used to be asked. तो जितनी भी spinal nerves हैं वो 31 pair of the spinal nerve है which are coming out from the spinal cord. If you observe the cut section of the spinal cord, in the cut section of the spinal cord, you can observe the dorsal horn and the ventral horn. Dorsal horn is receiving the sensory input, whereas ventral horn is giving us the motor output. It means dorsal horn is responsible for the sensory, and whereas ventral horn is responsible for the motor. And these two are interconnected with small interneurons. Dorsal root arising from the dorsal horn and ventral root is arising from the ventral horn. As I told you, dorsal root is carrying the sensory part, sensory tract, afferent fibers to the spinal cord, whereas ventral root is carrying the efferent fibers towards the target organ. That means dorsal root जो है वो आपकी sensory है, ventral root जो है वो motor है, और दोनों आपस में जुड़ के जो बनाएंगे, that is what the spinal nerve. So that's what spinal nerve are always mixed. Spinal nerve is always mixed. That's what I have written over there. The anterior root is consisting the motor, that is the efferent fibers, and posterior root is consisting the sensory, that is the afferent fibers. From the cell bodies in posterior root ganglion, they extend from posterior horn to the spiral gray matter. और दोनों आपस में जुड़ के जो है वो स्पाइनल नर्व बनाया, तो स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन वर्टिब्रल कैनाल में ही है. यहां से ये स्पाइनल नर्व बाहर आएगी. जब ये स्पाइनल नर्व बाहर आएगी, जैसे ही बाहर आएगी, ये सबसे पहली ब्रांच जो देती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज मेनिंजियल ब्रांच. याद रखिएगा, the first branch which is coming out from the spinal nerve, that is the meningeal branch, which goes back inside the vertebral column to supply the meninges. And second branch, if you observe, जैसे ही spinal nerve बाहर आया, spinal nerve बाहर आते ही ये दो में डिवाइड हो जाएगी आपकी dorsal and ventral. If you observe in this picture, you can see this is the dorsal root, this is the ventral root, both joins together and form the spinal nerve, that is the mixed, and this spinal nerve is further divided into dorsal ramus and the ventral ramus. Dorsal ramus is a singular, rama is a plural. This ramus word, dorsal ramus, is always supplying to your back skin of the back. Dorsal ramus is having three important components जो हम discuss करेंगे, that is supplying to the back. Whereas ventral ramus runs towards the anterior side to supply the anterior chest wall and the anterior part of the body. तो इसीलिए हम लोग ध्यान हो तो brachial plexus का हमेशा बोलते हैं, it is formed by the ventral ramus of C3, ventral ramus of C5, C6, C7, C8, T1. Why are we calling it ventral ramus? Because it is coming towards the anterior aspect. So that is found in the ventral. So this is very important. जैसे ही dorsal ramus और ventral ramus divide हुआ, ventral ramus आगे आएगा. Now look at the ventral ramus. Ventral ramus पे you are observing there is a ganglia which has been suspended through this. जो ganglia है, what is ganglia? Ganglia is a collection of the neuronal cell bodies outside the central nervous system.
इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। यही जो गैंग्लिया है दिस सप्लाइज द ऑर्गन, क्योंकि गैंग्लिया है तो डेफिनेटली कुछ फाइबर जो यहाँ आएंगे वी कॉल देम प्री गैंग्लियोनिक, और जो गैंग्लिया से बाहर जाएंगे वी कॉल देम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। कैसे होता है? जैसे ही सेंसरी एफरेंट फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचे, ब्रेन से इनपुट आया, इफरेंट फाइबर्स मोटार सिस्टम, मोटार जो फाइबर्स हैं वो आपके वेंट्रल रूट से बाहर आई। जब ये वेंट्रल रेमस में पहुंची तो जैसे ही वेंट्रल रेमस में पहुंची यहाँ इन्होंने देखा कोई गैंग्लिया है। इस गैंग्लिया में 3 तरीके से फेट है। कैसे है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर का फेट इन गैंग्लिया में? आप ऑब्जर्व करिए, देयर आर 2 रूट्स जिनके थ्रू गैंग्लिया सस्पेंडेड है। वन इज लेटरल रूट, अनदर वन इज द मीडियल रूट। जो लेटरल रूट है वी कॉल इट व्हाइट रेमस, और जो मीडियल रूट है वी कॉल इट ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस। आपने नाम सुना होगा ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस और व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस। Always remember, white rami communicans is always the lateral one, whereas gray rami communicans is always the medial one. आप देखिए व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस से सारे फाइबर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपके गैंग्लिया में आ रहे हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ फाइबर्स असेंड करेंगे और डिसेंड करेंगे। क्यों करेंगे ये असेंड और डिसेंड? द फ्यू फाइबर्स व्हिच कैन असेंड एंड डिसेंड टू कनेक्ट द डिफरेंट सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सो इट कैन फॉर्म द सिंपैथेटिक चेन। इसीलिए उनको ऊपर जाना है और नीचे जाना है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है सिंपैथेटिक चेन। कुछ फाइबर का क्या हो सकता है, कुछ फाइबर दे डू नॉट रिले इनटू द गैंग्लिया, they do not relay into the ganglia and they will come out from the ganglia as a splanchnic nerve, and then they relay in the ganglia which is inside the organ or near the organ. Suppose blood vessels को सप्लाई करना है, स्टमक को सप्लाई करना है, तो एब्डोमेन में गए स्टमक को सप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो ये व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस से जो फाइबर आ रहे हैं ये they do not relay into the ganglia, they will relay near the stomach, they will relay near the target organ. इसीलिए आप ऑब्जर्व करिए प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ पे लॉन्ग है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो नियर द गैंग्लिया जो स्टार्ट हुए हैं और टारगेट ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं ये बहुत छोटे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बड़े हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं। तो 2 तरीके से फेट हो गए। एक फेट तो क्या होगा कि दे कैन असेंड और दे कैन डिसेंड। Few fibers without relaying into the ganglia, they can come out as a splanchnic nerve and supply to the target organ. And the few fibers, they will relay into the ganglia. If they are relaying into the ganglia, now what do you have to do? ये जो रिले हुए हैं यहाँ से अब ये वापस ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस में आएंगे. So these are the post ganglion. So this is the second difference. The first difference was the white rami communicans is always lateral. Gray rami communicans is always medial. The second difference is white rami communicans is carrying the preganglionic fiber, whereas gray rami communicans is carrying the postganglionic fiber. So these are the postganglionic fibers because after relaying into the ganglia, these fibers are arising. So these are the postganglionic, and then they will go back into the spinal nerve. स्पाइनल नर्व से वापस जाकर के ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया से बाहर आएंगे, या डॉर्सल रूट से डॉर्सल रेमस से बाहर आएंगे, और डॉर्सल रेमस से बाहर आके दे विल सप्लाई टू द बैक ऑफ द स्किन. जो बैक की स्किन है वहां सप्लाई करेंगे, स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे, ब्लड वेसल्स को सप्लाई करेंगे. इसलिए इनके 3 कंपोनेंट हैं, सूडोमोटार, पाइलोमोटार एंड बेसोमोटार. इट मींस जो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस से फाइबर जा रहे हैं दे हैव 3 कंपोनेंट. Pseudomotor, it means they supplies the glands of the back which are situated in the skin. Pilomotor, they will supply the erector pylorem muscle which is inside the skin of the back. Vasomotor, they will supply the blood vessels which are situated in the skin of the back. That's what it is called as dorsal ramus. So always remember, ये बहुत important है difference between gray rami communicans and the white rami communicans that we must know. So this is the white rami, always laterally, gray rami is always medial. White rami is always carrying the preganglionic, whereas white rami is always carrying, gray rami is always carrying the postganglionic fiber, and white rami carrying only preganglionic fiber. Gray rami से जो white rami से जो जा रहे हैं वो splanchnic nerve बनाएंगे, या कुछ ascend करेंगे, descend करेंगे, relay नहीं करेंगे. और जो ग्रे रेमाई है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है. आफ्टर रिलेइंग द फाइबर्स यहाँ आ रहे हैं, दे हैव 3 कंपोनेंट, सूडोमोटार, पाइलोमोटार, बेसोमोटार, जो डॉर्सल रेमस से बाहर आकर के बैक ऑफ द स्किन को सप्लाई करते हैं. तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट ब्रांच.
तो पहली ब्रांच थी मेनिंजियल स्पाइनल नर्व की, सेकंड ब्रांच हो गई आपकी डॉर्सल रेमस एंड वेंट्रल रेमस, थर्ड ब्रांच आपकी क्या हो गई गैंग्लियोनिक ब्रांचेस, जहां पे व्हाइट रेमाई एंड ग्रे रेमाई। देन स्पाइनल नर्व का जो वेंट्रल रूट है, ये वेंट्रल रूट जब मिड एक्सिलरी लाइन में पहुंचता है स्किन के लेटरल वॉल पे, इट विल गिव ए ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच दैट सप्लाइज द स्किन ओवर द ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। यही लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, इफ यू रिमेंबर, T2 लेटरल सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, दैट वाज कॉल्ड एज इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, जो कनेक्ट कर रहा था मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म से। इसलिए हार्ट का पेन रेडिएट ये करता है आर्म में, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। So that is what the lateral cutaneous branch. Another branch is when it comes anteriorly ventral root, it will give another branch that is called as anterior cutaneous branch. It supplies the skin over the anterior wall of the body. So that is the anterior cutaneous branch. So first branch is the meningeal, second branch is the dorsal ramus and the ventral ramus. Then we have a ganglionic branches. Then we have a lateral cutaneous branch. Then we have white anterior cutaneous branch. And of course the muscular branches, because they also supplies the muscle. So this is about this that we have seen. This is a supply. This is what an idea about the typical spinal nerve and the white rami and the gray rami communicants, which is very important for us. Thank you.